Hey there guys, what is up? Welcome back to the channel and hope you are doing good. तो वो कहता है ना कि अगर आपकी फ्रेंडशिप 17 साल से ज़्यादा हो तो इट इज़ नो मोर फ्रेंडशिप, इट बिकम्स फैमिली। I don't have friends. I got family. तो वैसे ही आज एक दोस्त एक भाई के घर हम जा रहे हैं फॉर घर प्रवेश। तो मैंने सोचा क्यों ना बाइक लेके जाए और आपको भी साथ में लेके जाए। तो मिलते हैं बाइक पे डायरेक्टली, उधर बात करेंगे। तो अभी हम लोग ने नावेलिम क्रॉस किया है एंड या सो फार सो गुड। धूप थोड़ी ज़्यादा है बट चलता है। इट फील्स गुड टू बी ऑन द बाइक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। या आई विल अपडेट यू गाइज आगे अगर कुछ होता है तो। फॉर नाउ इट्स जस्ट अ नॉर्मल रोड, इंटरेस्टिंग ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने को। तो या not something interesting or entertaining but rather informational. Look at this bike on the right. ये literally रोड के बाहर गई almost while overtaking this truck. Just don't let the bike control you. Be in control of the motorcycle. And the second time, look at this, literally overtaking on a blind turn. अगर ट्रक ने ब्रेक नहीं मारा होता तो I don't even want to imagine the scenario what would have happened. तो अभी हम ऑलमोस्ट कानकौन पहुंच रहे हैं एंड रुके हैं इधर। बहुत ट्रैफिक है, लाइक बहुत गंदी। ओके, तो बैक ऑन द रोड अगेन। आई डोंट रिमेंबर इफ़ आई टोल्ड यू वेयर वी आर गोइंग टूवर्ड्स। तो हम लोग अभी जा रहे हैं कारवार, विच इज़ अबाउट 80 किलोमीटर्स और सो फ्रॉम माई हाउस एंड टेक्स अबाउट 2 आवर्स। तो एक्चुअली कारवार से थोड़ा पहले ही है एंड या लोकेशन हम बाद में लगाएंगे क्योंकि ये रास्ता तो हमको पता ही है। एंड वी गोना स्टे देयर, आई डोंट नो। आई हैव टेकन एन एक्स्ट्रा टी शर्ट, शॉर्ट पैंट एंड handkerchief, kind of bigger size handkerchief. I don't know what they are called. I think towels maybe. So yeah, but mostly we will come back because it's just 80 kilometers, not much. And ow, roads are, you can see them, it's a mixture actually, कभी अच्छे है कभी बुरे है। तो या चल रही है सवारी, चल रही है हमारी राइड एंड I'll see you soon, maybe at the border or after crossing the border. तो या हमारे सामने और एक एग्जांपल है ऑफ हाउ नॉट टू ड्राइव ऑन पब्लिक रोड्स। यू कैन सी द वेट, आई डोंट नो इफ यू कैन। वो जो XUV 500 है हमारे सामने K22, आई एम नॉट डिफेमिंग एनी रीजन और एनी स्टेट, but the way he's driving is absolutely crazy. Wait, so he's basically trying to overtake on every blind turn, which is not good no matter if you're a car or a motorcycle. ये देखो, and whenever someone is coming in the opposite direction, he's trying to overtake, like going in their lane. Now also you can see, like, I know this WagonR is in front, but you can see कि वो कैसे उसके आगे ही रह रहा है। देखो देखो देखो, on a full on blind turn he's going full speed. Yeah, the see, and there was a bike. Like, what's the hurry? Look again. कितना डिफरेंस कर लोगे भाई इतना रिस्की ओवरटेक्स करके। यू आर नॉट ओनली रिस्किंग योर ओन लाइफ बट द अदर पीपल का लाइफ ऑल्सो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
If only the roads were this open throughout from Vasco to the border, it would have been so much easier and it would have taken such less time. But what to do? It is what it is. It is what it is. It is what it is. So right now हम लोग कानकोण में है and इधर से it's quite नज़दीक to cross the border. So मिलते हैं border पे ही अभी direct. I won't turn on unless something interesting happens. A few moments later. So yeah, something interesting did happen. इतना risky overtakes करके, इतना risky maneuvers करके, the XUV is here only. Like आपने क्या उखाड़ा इतना risk लेके सब जगह पे. So if you are one of those people who drive like this, please, it's not worth it. Don't risk. रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है. Don't overtake on blind turns. कभी मत करना. Like you don't know what's on the other side, right? It can be another similar car with the similar speeds which you're carrying, or it can be a bike, a slow bike, it can be a cycle, it can be a parked vehicle also. So yeah, blind turn पे तो overtake मत करो यार. Okay, so here is the border. So yeah, just like that, we are in Karnataka now. इसका डोर ओपन है शायद. डोर ओपन आ दे जाए. अरे बस कर भाई. Bruh, who parks that side, man? Oh, nah. We mistake someone for being our friend. तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारे दोस्त ने बोला है कि वो हम हाईवे पे रुका है हमारे लिए, तो हमें लगा कि वो हमारा ही दोस्त है. कोई नहीं. ओके, तो ये है मेन हाईवे. इधर से हम ब्रिज क्रॉस करने के बाद कारवार पहुंचेंगे एंड हम लोग यहाँ पे रुके हैं फॉर आवर फ्रेंड. सो ही इज़ टेकिंग अ यू टर्न एंड इज़ कमिंग बैक. बाय. Okay, so now that we are here, I will see how the situation is, and public में I don't know if I'll vlog or not, but मिलता हूँ आपको थोड़े ही देर में. बने रहिए. आया. Approximately 4 o'clock बज चुके हैं and we are going to a beach. I mean, he's taking us to a local beach over here. So yeah, place is pretty nice. It's अच्छा, यहाँ पे शांत है और okay. अच्छा, यहाँ पे शांत है. ओके, तो एज आई जस्ट सेड, यहाँ पे अच्छा है, बहुत शांत है. अ डॉग केम आउट ऑफ नोवेयर एंड ट्राइड टू अटैक अस. ओह, लोकल क्रिकेट मैच.
पोए मारे लोकेशन पर। I wish we had a drone over here. Would have looked amazing from the sky. और इसी बात पे मैं आपको ये लोकेशन दिखाता हूँ इस छोटे से सीक्वेंस के साथ. Such a beautiful location, man. बीच पे एक्चुअली बहुत ही गर्मी थी, सो वी आर गोइंग टू अ डिफरेंट लोकेशन. वहाँ पे शेड नहीं था एंड या और करते भी क्या हम लोग. एनीवेज वी आर फ्रॉम गोवा, तो हम लोग को तो बीच इज़ अ वेरी कॉमन साइट. सो या and it's not like I have not been on these roads before. मेरे पहले के दोनों कर्नाटका ट्रैवल सीरीज़ में भी आप देख सकते हो, कार से गए थे इस रोड में से. इस टाइम बाइक से एक डिफरेंट फील आता है. अच्छा लगा फील आ रही बोल. I know. I'm getting off from the wrong side of the bike, but left side में जगह नहीं थी यार. We tried strawberry shake and cold coffee over here. अच्छी थी. A few moments later. So that's the name of the place if you want to visit it in Karwar. And this is the Continental GT 650 here in Karwar city. I mean, this is, according to me obviously, one of the best bikes you can buy right now from Royal Enfield, the GT 650. And for those who don't like or don't prefer the cafe racer stance, y'all can definitely go for the Interceptor. But this engine is really something very nice. तो आज का दिन, except for the sun, I mean it was too hot. Rather than that, it was really very fun. The ride, दोस्त के घर रुकना, उधर खाना, then we went on the beach. I mean the whole thing was very fun, very relaxing and something different than we usually do. ओ बाय द वे, वो प्लेस पे वहाँ पे खाने को भी मिलता है, लाइक shawarmas, चिकन रोल्स एंड ऑल दैट गुड स्टफ. एंड वेज में भी आपको ऑप्शंस है, बट वी डिडंट हैव एनीथिंग बिकॉज वी वर फुल. हमने लंच थोड़ा लेट किया था एंड अभी हम लोग निकलेंगे, सो चलाते समय बाद में सुस्ती आएगी. सो दैट्स व्हाई वी डिडंट हैव. एंड या वी आर नॉट स्टेइंग, वी आर लीविंग. काइंड ऑफ सिमिलर टू गालजी बाग, बट यहाँ पे आइलैंड्स बहुत है, अच्छे दिखते हैं. And you know what? This is actually the first time I'll be looking at my bike with this graphics on and how it looks on the road. Looks pretty good. God, I love this machine. This sound. तो हम लोग अभी हमारे दोस्त के घर जा रहे हैं और वहाँ से हमारे कपड़े, बैग एंड कैमरा गियर कलेक्ट करके वी वुड लीव फॉर गोवा. A few moments later. So Rohan is insisting us that he would come to drop us till the border. So yeah, it's almost sunset. No, not really. We'll be home in another 1.5 hour. Traffic नहीं लगा तो. Traffic लगा तो it will take some time. Let's see. तो एक्चुअली हम लोग ने अभी बॉर्डर क्रॉस की. बिफोर दैट वी स्टॉप्ड फॉर अ वाइल. उधर गोप्रो मैंने ऑन किया था बट इट जस्ट फ्रोज एंड डिड नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग. तो बेसिकली कुछ नहीं, हम लोग ने सिर्फ एक दूसरे को बाय बोला
my friend went back, Rohan, he went back, and yeah, we are in Goa now. We might wait at Galji Bagh or before Galji Bagh to check out the view from there. Other than that, I don't think there's anything else on our mind. And we did wait here at the bridge just to see the view and the sunset. Okay, so after watching the sunset over here, we are leaving now, and I think GoPro की battery भी low है, तो I think I'll call it for the ride part over here. And I think I'll end the video here as well. यहाँ तक वीडियो देखने के बाद लाइक का बटन दब जाना चाहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए. एंड शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड और टू. मिलते हैं किसी और एक ऐसे ही वीडियो में. Until then, take care and peace.